morning, everyone. My name is Charu. Welcome to English Out. And today we'll be discussing important legal maxims and terms which are used as a part of a legal jargon. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीगल मैक्सिम्स होते क्या हैं. So legal maxims are principles of law which are mostly in Latin language. ज्यादातर दूसरी लैंग्वेज के टर्म्स होते हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझा जाता है और very frequently used as a part of legal jargon, and they are used to explain important concepts of law. अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और कैसे उनको यूज किया जाता है इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वो भी समझेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट टर्म विच वी विल टॉक अबाउट इज अब इनिशियो. इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज अब इनिशियो. इनिशियो वर्ड साथ में लिखा होता है. इनिशियो इंग्लिश में अगर हम इनिशियो का रिलेटेड वर्ड समझे तो वो इनिशियल होता है. इनिशियल मतलब फ्रॉम द बिगनिंग. सो it actually means from the beginning if we translate into English, and uses as regards how it is used. Example of it is void ab initio. कई अग्रीमेंट जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हैं तो वो उनमें हम देखते हैं कि कई अग्रीमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होते हैं, तो उनको वॉइड अब इनिशियो अग्रीमेंट्स कहा जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज एक्टिस रियस. एक्टिस रियस क्रिमिनल लॉ का, लॉ ऑफ क्राइम जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका. इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एलिबाई और एलिबी. डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, which basically means at another place or elsewhere. इसका यूजेज या लीगल रेलेवेंस हम सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में देख सकते हैं. जब अगर कोई सस्पेक्ट है फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम and he or she is questioned as regards it, and he or she pleads alibi. He or she has files a plea of alibi, which means he or she was not present at the scene of crime. So that is considered as plea of alibi under section 11 of the Indian Evidence Act, and it is the English translation of the same is at another place or elsewhere. Moving to the next slide. The next term is amicus curiae or amicus curiae, which is considered as a friend of court. The next term is audi alteram partem, which means listen to the other side. It's an important principle of natural justice. Nemo judex causa in sua and audi alteram partem are important terms of principles of natural justice, which are extremely important as regards the administration of justice. And ये terms जब हम लोग administrative law पढ़ते हैं उसमें हम ये पढ़ते हैं as regards the subject, as regards the topic of principle of natural justice. The third term on this slide is bona fide, which means in good faith. इसका opposite होता है malified, which means in bad faith. तो bona fide और malified ऐसे terms होते हैं जो कई बार यूज किए जाते हैं to explain intention, to explain the action of a particular person on these contexts. Moving to the next slide, caveat या caveat ऐसे करके इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, which is warning or caution, English translation, which is a very important part of civil law. Another usage of this particular term is caveat emptor, which puts a burden on the buyer to examine the goods before purchasing. अगर आप कोई गुड्स परचेज करें, आपकी ड्यूटी बनती है, आप पे एक बर्डन है कि आप उसका इंफॉर्मेशन चेक करें. जैसे कि प्रोडक्ट के पीछे एक इंफॉर्मेशन लिखा होता है एज रिगार्ड्स एक्सपायरी, एज रिगार्ड्स द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, तो आप वो सब चेक करें बिफोर बाइंग. दैट्स योर ड्यूटी एज अ बायर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, caveat vendor, which means let the seller beware. Vendor, similar sounding word. So let the seller beware. This maxim basically talks about making the seller accountable for the goods they are selling. Of course, if a seller is selling certain, say, food products, and there is certain expiry attached to such products, so he or she has to make a conscious effort कि जो वो डिस्प्ले पे गुड्स लगा रहे हैं वो एक्सपायर्ड ना हो, वो उनकी अपनी ड्यूटी बनती है. So that is it is referred as caveat vendor. Moving to the next term, it is pronounced as certiorari, which is a writ. Writ क्या होती है? Writ is a way of enforcing a fundamental right. Part 3 of the Constitution में हम fundamental rights पढ़ते हैं, और जो writ होती है, एक writ petition फाइल कर सकता है कोई भी इंसान जिसका fundamental right infringe या violate हुआ हो. So certiorari is a type of writ, just a way of enforcing a fundamental right. So a writ or order by which the higher court reviews the order of the subordinate court.
जैसे कि हम जब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ते हैं तो लोअर कोर्ट्स का कई बार डिसीजन जो है वो उससे हायर कोर्ट रिव्यू कर सकता है. द हायर कोर्ट हैज द पावर एंड a writ or order by which the higher court, because of which writ or order a higher court reviews the order of the subordinate court, that writ or order is termed as certiorari. Moving to the next term, corpus, which means body. Corpse, English word है, which is used in relevance with the body. So legal relevance है writ of habeas corpus. Habeas corpus की एक writ होती है which is filed by the next friend of the person who has been unlawfully detained or arrested, और उसके रिलीज के रिगार्डिंग होती है. It is regarding the release of a body which has been unlawfully detained or arrested. Moving to the next term which is damnum sine injuria. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट का टर्म है. इट मैक्सिमम विच बेसिकली मीन्स डैमनम विदाउट damages without injury. Damnum मतलब damages, sine मतलब without, injuria मतलब injury. Damages without injury. ठीक है, इसका लीगल रेलेवेंस है. वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टॉर्ट्स लॉ. जब हम टॉर्ट्स लॉ पढ़ते हैं उसमें हम लोग लीगल इंजरी के बारे में पढ़ते हैं एंड वी स्टडी टू मैक्सिम्स एज पार्ट ऑफ द सेम व्हिच इज डैमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डैमनम, एंड डैमनम सिने इंजुरिया इज वन ऑफ them. Next is de facto, which means in fact, de jure या de jure, which basically means in law. Next is ex parte. Ex parte decree कई बार पास करी जाती है, which means the legal proceedings in the absence of one party. If an ex parte decree has been passed, इसका मतलब एक पार्टी प्रेजेंट नहीं थी जब वो डिक्री पास करी गई. It's like a way this term is used. Moving to the next slide. Habeas corpus, इस रिट के बारे में मैंने जस्ट अभी बात करी थी. So it's a writ, this writ which protects against unlawful imprisonment, detention, arrest, उन सब चीजों के लिए. और जो friend of the person who is unlawfully detained or arrested, वो फाइल करता है on the behalf of the person arrested or detained unlawfully. इंजूरिया सिने डैमनम, इसका ऑपोजिट हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि डैमनम सिने इंजूरिया होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्च. इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज. जब इंजरी विदाउट डैमेज होती है तब लीगल डैमेजेस जो हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं. लीगल इंजरी जो होती है वो वायलेशन ऑफ लीगल राइट की वजह से होती है. इफ योर लीगल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड तो आपको लीगल इंजरी कॉज नहीं हुई है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटर एलिया या इंटर आलिया, विच बेसिकली मीन्स अमंग अदर थिंग्स इट इज यूज एज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लॉ. समटाइम्स आप जजमेंट्स में सुन सकते हैं, कई बार किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो सकता है inter alia, inter alia. Just it is pronounced like that, which basically means law or right. Jus cogens is a very important element of international law. इसका ये मतलब होता है फंडामेंटल रूल और प्रिंसिपल पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल लॉ. कोई ऐसा रूल या ऐसा कोई प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ का जो इतना फंडामेंटल है, इतना बेसिक है, विच इज इंट्रिंसिक एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो यूज कोजेंस का उसको स्टैंडर्ड दिया जाता है, उसको उसका मतलब उसको यूज कोजेंस कंसीडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोहिबिशंस अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को यूज कोजेंस, उसकी प्रोहिबिशन को यूज कोजेंस का दर्जा दिया गया है, उसको उसका पोजीशन दिया गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. लोकस स्टैंडी या लोकस स्टैंडाई इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, which basically means the right or ability to bring a legal action in the court of law. If a particular person has a local standard, then only he or she can bring a legal action before the court of law. Next is mala fide, which means in bad faith, it's opposite of bona fide, which we just studied a few slides back. Moving to the next slide, mandamus is also a writ. ये writ का literal meaning होता है command. Writ of mandamus when addressed to someone demands some performance of activity on his part. अगर आपको writ of mandamus issue हुआ है तो आपसे कोई activity demand करी गई. This demand pertains to the performance of a public duty. Necessarily जो demand करी गई है वो public duty की performance के लिए करी गई है. मतलब कुछ ऐसा जो public at large को serve करता है. Moving to the next slide, mens rea. Mens rea मतलब गिल्टी मेंटल स्टेट. एक्टस रियस और मेंस रिया इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ होते हैं. दोनों का होना जरूरी है टू कंप्लीट अ क्राइम. देयर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम. एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. इंटेंट पता करना कि क्या जिसने एक्टस रियस किया, जिसने गिल्टी एक्ट किया, क्या उसका मेंस रिया भी मौजूद था उस एक्ट को कमिट करने में.
that when we talk about the mindset, we talk about mens rea. Modus operandi, a modus operandi, it's a particular way of doing something, way of operating, mode of operating. Mutatis mutandis, it's a Latin expression which basically means necessary changes having been made. It's the necessary changes which have to be suggested are known as mutatis mutandis. Next is nemo judex in causa sua, very important principle of principles of natural justice. Audi alteram partem nemo judex causa in sua, reasoned orders are important elements of principles of natural justice. It's a Latin expression. इसका ये मतलब होता है no one should be judged in their own cause. इसको rule against bias भी बोला जाता है. Different type of biases के बारे में बात करी जाती है. Any judging authority must be impartial and neutral while making a decision. Of course, that authority who is hearing a matter should be impartial, it should be neutral, and it should treat both the parties with equal amount of attention. That is what this maxim stands about. Next is novation. Novation means it's concerned with innovation, novel, which basically means new. So an important part of contract law, it means creation of a new contract. And simultaneously means that the old contract is terminated and it need not be performed. So a new agreement which has substituted the old one shall be valid and enforceable and thus shall be performed. Next is obiter dictum, which basically means an incidental statement. Some statements are made in a judgment. They are known as passing statement. ऐसे बोला जा रहा है. They are important, but they are not of major consequence as regards to decision. So what we have written is that which is said in passing statement as I just mentioned, and such statements are not necessary for the decision of the court. Nonetheless, they are important. Decision के लिए necessary नहीं है, but ऐसा नहीं है वो significant नहीं है. It is not binding while deciding a case. They are not binding and they are not necessary, but they are significant as regards the judgment. Onus probandi, burden of proof. Criminal cases में बात करी जाती है. The burden of proof is on the prosecution side. Beyond reasonable doubt proof करना होता है. The prosecution has to prove without a reasonable doubt that he or she has suffered an injury or has been affected. So the advocate for the prosecution side has to prove that his or her client has suffered an injury and without a reasonable doubt, like completely. There shouldn't be 1% of doubt, even 1% of doubt as regards that. Pacta sunt servanda is important principle of international law, which means agreements must be kept. जब हम treaties वगैरह पढ़ते हैं तो हम pacta sunt servanda का term बहुत बार पढ़ते हैं, which basically means agreement must be kept. treaty भी एक तरीके का agreement ही होता है. Moving to the next slide, per curiam by the court. It's a very simple term which is used as a legal jargon. It means that the decision is made by the court. Here the court makes a decision while acting collectively. Person means by itself, persona non grata matlab non-grateful person. If someone becomes persona non grata, they become unwelcome because of the something they have said or done. And opposite of persona non grata is persona grata, matlab grateful person. A person, a diplomat in most cases, acceptable to certain others. Lastly, prima facie, which means at first sight, based on first impression. जैसे आपको पहले कोई चीज प्रतीत हो कि ऐसी लग रही है, prima facie, on the face of it ऐसा लग रहा है, आगे पता नहीं. You have not gone into facts and not completely studied something. But prima facie आपका एक opinion होता है चीजों को लेकर. That is at first sight. What you feel at first sight. It is accepted as correct unless proved otherwise. That's what I just explained. So with this, we have discussed important legal terms and maxims which are used as a part of legal jargon. And I hope you have understood it. Thank you so much.